Namaste and a very good afternoon, ladies and gentlemen. On behalf of Dr. D.Y. Patil Jnana Prasad University's School of Business and Strategy, I extend a heartfelt welcome to all of you to Diksharam 2025, the sacred beginning of the academic journey for the inaugural MBA batch 2025-27. Diksha means initiation and Aram means the beginning. True to its name, today marks the commencement of a transformative journey of learning, character building and professional excellence. We shall now begin this auspicious ceremony by rising for the national anthem, a tribute to our motherland. I request everyone to kindly rise in respect. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Thank you everyone. Please be seated. To welcome the new batch with vibrant energy and cultural grace, let us now witness a traditional dance performance by Miss Saili and Miss Nandini. Their dance art celebrates the spirit of India and its timeless art forms. So let's welcome our performers with a huge round of applause. ah
we gratefully acknowledge the esteemed presence of Dr. Dheeraj Agrawal sir, Pro Vice Chancellor Dr. D.Y. Patil Jnana Prasad University, Dr. Atul Kumar sir, Registrar, Dr. Vishal Vadachkar sir, Dean, Faculty of Management Studies, Dr. Nitin Shelje sir, Principal Dr. D.Y. Patil Institute of Technology, Pimpri, Pune, Dr. Pradyumna Rathod sir, Director, School of Hospitality and Tourism, Dr. Raja Roy Chaudhary sir, Director, School of Liberal Arts. Your participation in the induction ceremony has added great academic value and significance to the occasion. To dispel darkness and ignite the flame of wisdom, we now invite our esteemed dignitaries for the ceremonial lighting of the lamp, symbolizing knowledge, prosperity and auspicious beginning. May I now request Honorable Dr. Somnath Patil sir, Honorable Dr. Rohini Somnath Patil madam, Mr. Amit Puri sir, Mr. Saurabh Dwivedi sir, Acharya Jaspreet Singh sir, Dr. Dheeraj Agrawal sir, Dr. Atul Kumar sir and Dr. Amol Gawande sir to come forward for the lighting of the lamp ceremony. As we light the lamp, let us invoke the blessings of Ma Saraswati, the goddess of wisdom, who was called to Saraswati Vandana. या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रान्विता या वीणां वरदण्डमण्डितकरा या Now I request all the dignitaries present to take their seats on the dais. As we proceed to felicitate our distinguished guest, whose presence today adds immense value to this inaugural ceremony, their vision, leadership and contribution inspires us all. Now, I kindly invite Honorable Dr. Somnath Patil sir to felicitate our esteemed guests, Mr. Amit Puri sir and Mr. Saurabh Dwivedi sir, in appreciation of their valuable presence and contributions. and Dr. Asha Kiran Madam to kindly felicitate our visionary leaders, Honorable Dr. Somnath Patil Sir and Honorable Dr. Rohini Somnath Patil Madam, as a gesture of our heartfelt gratitude and admiration for their continuous guidance and dedication. I now request Dr. Amol Gawande sir to felicitate Acharya Jaspreet Singh, a renowned Vastu expert.
Again, I request Dr. Amol Gawande sir to felicitate Dr. Dheeraj Agarwal sir, Pro Vice Chancellor, Dr. D.Y. Patil, Gyan Prasad University, Pune. And Dr. Atul Kumar sir, Registrar, Dr. D.Y. Patil, Gyan Prasad University, Pune. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, it is an honor to introduce a distinguished academician, dynamic leader and director, Dr. Amol Gawande. Dr. Gawande holds a PhD in management and brings with him a rich blend of academic excellence and administrative prowess. With over 2 decades of experience in higher education and leadership, Sir has played a pivotal role in shaping management education that is both globally relevant and locally grounded. Throughout his career, Dr. Gawande has held several strategic positions in reputed academic institutions. His core expertise lies in finance and institutional strategy. A firm believer in value-based leadership, Dr. Gawande champions an education model that fosters innovation, empathy, and ethical decision-making. Under his visionary guidance, Dr. D.Y. Patil B School has witnessed a significant transformation from curriculum innovation and industry partnerships to international collaborations and a strong placement ecosystem. His leadership continues to inspire faculty and students alike to strive for excellence and integrity. Recognized for his thought leadership, Dr. Gawande has been a keynote speaker at national and international conferences and has published extensively in renowned national and international journals. More than an administrator, Sir is a mentor and motivator known for his open door policy and student-first approach. As we welcome the new batch of aspiring professionals today, we are proud to have Dr. Amol Gawande sir as the torchbearer of our institution's values and vision, leading by example and shaping not just careers but character. We thank you, sir, for your support and leadership in shaping this institution and being the catalyst of change in the sphere of management education. आज हमारे बीच उपस्थित है हिंदी पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना माना नाम श्री सौरभ द्विवेदी। सौरभ द्विवेदी द ललन टॉपिक्स के संस्थापक संपादक है, एक ऐसा डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म जिसने हिंदी पत्रकारिता की शैली, भाषा और विश्वसनीयता तीनों को नई पहचान। जो सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा, उसके बाद मैं स्टेज पर बैठे लोगों को प्रणाम करूँगा, वो ये है नेवर गेट यूज्ड टू तारीफ। इट्स सबसे ज़्यादा अचूक एंड स्लो पॉइजन। ठीक है, तारीफ के आदी नहीं होना है, इससे बहुत ज़्यादा फायदा होता नहीं है। तो मुझे लगा कि जो बात मैं स्टेज पे कहने जा रहा हूँ, अगर मैं वही घुट्टी खुद भी पीऊँ तो ज़रूरी है। मैं आप लोगों को बहुत सारे प्रवचन देने वाला हूँ, जिंदगी को कमाल का कैसे बनाएं, 2 साल के कोर्स के बाद सबसे धांसू प्लेसमेंट कैसे पाएं, कैंपस में रहने के दौरान प्यार कैसे करें, पेरेंट्स से ज़्यादा पैसा कैसे पाएं, इस तरह के बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो मैंने इजाद कर रखे हैं। एक एक करके आपको उनके बारे में बताऊंगा। ऐसा आप सोच के अगर आए हैं तो गलत आए हैं। मेरी माँ कहा करती है, बेटा अपने मरे ही स्वर्ग मिलता है, तो वो तुम लोगों को खुद ही फिगर आउट करना पड़ेगा। मैं आप लोगों को संस्कृत के एक श्लोक की कहानी सुनाने भर आया हूँ, और उससे पहले डॉक्टर सोमनाथ पाटिल, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर रोमी, थैंक यू सो मच। डॉक्टर अमोल, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत विद्वान लोग मंच पर बैठे हैं जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल किया है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इन लोगों से कुछ ना कुछ सीख कर जाएंगे। अब इन लोगों के बीच में हमको भी बुला लिया गया है, तो मैं सिखा तो क्या ही पाऊंगा, कुछ बातें कर लेता हूँ आपसे, ठीक है। पर बातें करने के लिए एक काम बड़ा ज़रूरी है, वो ये है कि आप लोगों के पास बहुत अच्छे मोबाइल फ़ोन है और जेब भी है आप लोगों की पॉकेट में, और आपकी हाथ की मांसपेशियां थक भी गई होंगी फोन उठा उठा के। तो मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है आपसे भी, इसको भीतर रख लीजिए। स्क्रीन पर तो आप लोग देखते ही हैं, आज सच्ची मुच्ची का जरा आमने सामने बात हो।
क्योंकि है क्या कि मोबाइल अभी आए हैं जो 4 रोज पहले, ये कुदरत में जो एक याददाश्त और ये जो कैमरा दे रखा है ये ज्यादा अचूक है। हाँ भाई पहलवान रख लो भीतर, शाबाश। आर यू पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग टीम मैन? आपको कैसे मना करेंगे फिर? यहाँ पे लिखा हुआ है दीक्षारंभ। अब तुम लोगों के सीखने की शुरुआत हो रही है। इतने सारे असाइनमेंट मिलेंगे कि दिन कब रात में तब्दील हो जाएगा पता नहीं चलेगा। उसके लिए मैं आप लोगों को सिर्फ सहानुभूति दे सकता हूँ। डील विद इट और लुक फॉर दैट शर्मा अंकल हु टोल्ड यू कि वोकेशनल कोर्सेज में बहुत स्कोप है। किसी ने तो तुम्हें बताया होगा ना कि एमबीए कर लो लाइफ ठीक हो जाएगी। मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि लाइफ के ठीक होने का एमबीए से कोई बहुत ज्यादा संबंध है नहीं। एक दूसरा एमबीए है जो तुम लोग इस कोर्स के साथ साथ पैरेलल करना, जो तुम्हारे अपने दिमाग में चलेगा, उसके बारे में बात करते हैं। और वो शुरू होता है ऑब्जर्वेशन से। आपसे उम्मीद की जाएगी कि आप लोग बड़े बड़े बिजनेस मैनेज करें, सीईओज बने, अपनी कंपनियां शुरू करें, करिएगा। बढ़िया सीटीसी हो, उसमें जीरो बढ़ते चले जाएं, फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करें। व्हाई लिमिट योरसेल्फ टू बिजनेस क्लास? पेंट हाउस हो, भले ही पेंट हाउस तक पहुंचने में इतने पेंटअप हो जाए, इतने थक जाएं कि सेहत का ध्यान रखें, ऐसा मत करना। जब हम लोग यहाँ पर आए तब हम सबसे उम्मीद की गई एक नागरिक के तौर पर कि हम राष्ट्रगान गाएं, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। तो मुझे आज ये मौका मिला है कि मैं भारत के भाग्य विधाताओं से कुछ बात करूं। कौन है ये भारत के भाग्य विधाता? आसमान में तो बैठे नहीं है, कोई मसीहा नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, कोई अतीत की सुनहरी याद नहीं है। ये भारत के भाग्य विधाता भारत के खिलखिलाते हुए, ऊर्जा से, एनर्जी से भरे हुए नौजवान हैं, नौजवान लड़के लड़कियां जिनके सामने पूरी जिंदगी पड़ी है और जिनके सामने ये सीखने का सबक पड़ा है कि कैसे भक्ति और शक्ति को एक करके संकल्प को पूरा किया जाए। तब आपकी जय होगी, जो हम आखिरी में कहते हैं जनगण मन में, जय हे जय हे जय हे। अब इस जय के लिए क्या करना है? बहुत सारे तरीके हैं। जब मैं यहाँ आ रहा था तो मुझे एक श्लोक ध्यान आ रहा था, बचपन में सीखा था, शायद आप लोगों के काम आए। श्लोक संस्कृत में है पर मैं तसल्ली से उसका आपको हिंदी में अर्थ बताऊंगा। विद्यारंभ की बात हो रही, दीक्षारंभ की बात हो रही, तो विद्यार्थी को कैसा होना चाहिए, स्टूडेंट को कैसा होना चाहिए। और मैं आपको ये दुआ देकर जा रहा हूं कि आप जिंदगी में कभी भी ये जो विद्यार्थी वाली डेजिग्नेशन है इससे मुक्त ना हो। ये हमेशा आपके जेडी का, हमेशा आपके केआरए का हिस्सा रहे। यू नेवर स्टॉप लर्निंग। श्लोक इस तरह से है कि काक चेष्टा वको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव चा अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। स्टूडेंट कैसा होना चाहिए? बुजुर्ग बता गए हैं। कौवे को देखा है आपने? किसी ने देखा कौवे को? नहीं देखा। अरे जीओटी में ही देखा होगा यार, और कहीं नहीं। तो जीओटी देखा है कि नहीं? ये मत बोलना कि सीएटी कैट में मगिंग करते करते इतने खर्च हो गए कि जिंदगी जीना भूल गए। कौवे जैसी चेष्टा होनी चाहिए। अब ये कौवे जैसी चेष्टा क्या है? कौवे को कद्दू फर्क नहीं पड़ता है कि आप उसको काला बुलाओ, आप लोगों को फर्क पड़ता है। हिंदुस्तानियों को बहुत फर्क पड़ता है कि वो कैसे दिख रहे हैं। We are never being comfortable about our complexion. इसीलिए हमारे मुल्क में आपके जैसे नहीं पर कुछ बिगड़े हुए एमबीए वाले गोरेपन की क्रीमें बेचते हैं ना। घरों में हिदायतें दी जाती हैं, चाय मत पियो ऐसे हो जाओगे, फलानी चीज घिस लो ऐसे हो जाओगे। और कभी ये नहीं कहा जाता है कि अगर अपने आप को बहुत हाइड्रेट रखोगे, रेगुलर वर्कआउट करोगे, ग्रीन वेजिटेबल्स वाली डाइट रखोगे तो तुम्हारी स्किन हेल्दी होगी। ये नहीं कहा जाता है। श्रेष्ठता का पैमाना त्वचा का गोरा होना, जो कि नितांत गलत है। तो कौवे की चेष्टा पे तो बहुत बाद में आऊंगा मैं, पहले कौवे पर आता हूं। कौवा काला है और कभी इस बात की शिकायत नहीं करता है कि मैं काला क्यों। He or she, they are super comfortable in their skin.
तो एक विद्यार्थी के तौर पे जो तुम्हें चीज सबसे पहले सीखनी है, और वो किसी क्लासरूम किसी सिलेबस में नहीं है, वो ये है कि इस बात को स्वीकारो दैट यू लुक इन अ सर्टेन वे एंड यू आर नॉट प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। एक डीएनए की लंबी परंपरा है। योर पेरेंट्स मेड लव एंड दिस इज हाउ यू अपीयर्ड इन द वर्ल्ड, राइट? तो जो तुम्हारी पहचान है, और ये तुम्हारी पहचान में सिर्फ तुम्हारी स्किन नहीं आती है, बाय द वे अगर तुम्हारी स्किन डार्क है तो यू शुड बी एक्स्ट्रा ग्रेटफुल, क्योंकि स्किन डार्क होती है पिगमेंटेशन की वजह से, और ये वाला पिगमेंटेशन इसलिए होता है क्योंकि आप इक्वेटर के रिलेटिवली करीब हैं और आपको अल्ट्रावायलेट रेज से स्किन कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी रिलेटिवली ज़्यादा है। तो अगर आप यहाँ बिल्कुल दूध सी सफ़ेदी निर्मा सी आई वाले माहौल में रहेंगे तो ये आपकी त्वचा के लिए और स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। नेचर आपसे कहीं ज़्यादा शातिर, कहीं ज़्यादा विद्वान साइंटिस्ट है। उसने जब आपको हजारों वर्षों में गढ़ा और आपकी त्वचा का रंग भी टिश दिया, डार्क दिया या गोरा भी दिया, तो वो अपने ढंग से सही काम कर रहा था। बट सिर्फ अपनी कॉम्प्लेक्शन से कंफर्टेबल होने की बात नहीं है। आप में से कोई भंडारा गोंदिया से आया होगा, कोई चंद्रपुर से आया होगा, कोई यूपी, बिहार, महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से, कोई कोंकण से आया होगा, कोई लातूर से, सांगली से आया होगा। हमारी सबकी उरई से भी आई है। जी आपको प्रणाम। उरई वाले हरकतों से बाज नहीं आते। एक स्टेज पे खड़ा, दूसरी चांदी रखी खाने ले। आप यहाँ से भी आए हैं, ये हमेशा आपके गर्व का और परिचय का हिस्सा होना चाहिए। You should never feel bad about it कि मैं एक बंगाली स्पीकिंग, मराठी स्पीकिंग, कोंकणी स्पीकिंग, भोजपुरी स्पीकिंग, मगही स्पीकिंग, हरियाणवी स्पीकिंग रीजन से आया हूँ, इसलिए मेरी भाषा इतनी पॉलिश नहीं है। Should I feel bad about it? Not at all, sir और मैम। ये तुम्हारी जो मातृभाषा है, जो कि जरूरी नहीं कि अंग्रेजी हो, बहुत कम लोगों की अंग्रेजी मातृभाषा होती है। जरूरी नहीं कि वो वैसी चेष्ट मराठी या हिंदी हो जो स्टेजेस पर बोली जाती है या टेक्स्ट बुक में लिखी जाती है। ये तुम्हारी पहचान का हिस्सा है। यू हैव टू बी सुपर कंफर्टेबल विद इट। तुम जिन इलाकों से आए हो, तुम खानदेश से हो, तुम मराठवाड़ा से हो, तुम कोंकण से हो, तुम विदर्भ से हो, तुम मध्य प्रदेश के ट्राइबल इलाकों से हो, तुम छत्तीसगढ़ की राइस बेल्ट से हो, तुम छोटा नागपुर के पठार से हो, कहीं से भी आए हो, वो भौगोलिक स्थिति, वो भाषा तुम्हारी पहचान का हिस्सा है और तुम्हारी ताकत है। हर दफा जामवंत नहीं आएंगे हनुमान को बताने की उनके अंदर कितनी शक्ति है। इसलिए नेवर बी अशेम्ड ऑफ योर ओरिजिन। जेंडर को लेके मुझे पता है कि मेरे देश में, मेरे टाइम और स्पेस में लड़कियों की फाइट लड़कों से ज्यादा होती है। लड़के जब सड़क पे निकलते हैं तो उनको इस बात की फिक्र नहीं करनी पड़ती है कि उनकी शर्ट के कितने बटन खुले हैं। अनफॉर्चुनेटली लड़कियों को करनी पड़ती है। लड़कों को अपने हिस्से की आवारागर्दी करते वक्त ये नहीं देखना होता है कि अमुक गली में कितनी स्ट्रीट लाइट जल रही है या नहीं जल रही है, उनके फोन की बैटरी कितनी चार्ज और रिचार्ज है। लड़कियों को देखना पड़ता है। दे हैव टू बी सुपर कॉशियस अबाउट द गेज, अबाउट द स्पेस, अबाउट द टाइम एंड अबाउट द बंदिशें। लड़के एकदम सन्नाटे में बैठे हैं कि ये तो सिलेबस के बाहर की चीज होगी। जब तुम इस लायक बन जाओगे कि लड़कियां तुमसे दोस्ती करें, और उसके लिए इंस्टा पे ऊटपटांग रीलें बनाना और टिंडर पर प्रोफाइल बनाना जरूरी नहीं है, तब तुम पाओगे कि जब वो तुम्हारी दोस्त बन गई हैं और तुम्हारे साथ कंफर्टेबल हो गई हैं और तुम्हारी कंपनी में सेफ फील करती हैं, तो वो तुमसे अपनी दुनिया साझा करेंगी। I was fortunate enough that women shared their world with me, इसलिए मैं तुम्हें ये बता पा रहा हूँ। जेंडर ये हमारी पहचान का एक हिस्सा है। बात कौवे से शुरू हुई थी, कौवे पे ही रखता हूँ। कौवा है सुपर कंफर्टेबल, वो शिकायत नहीं करता कि यार मैं उड़ता हूँ, तैरता नहीं हूँ। हमें ये बहुत शिकायतें होती हैं। लड़कियों को कुछ जायज भी होती है कि साहब बहुत मुश्किल से यहाँ तक आए। आई कैन ओनली इमेजिन कि कितना मुश्किल रहा होगा यहाँ बैठी बहुत सारी लड़कियों को अपने पेरेंट्स को ये कन्विंस करने में कि उनको एक वोकेशनल कोर्स करना है और घर से दूर जाकर करना है, क्योंकि दहेज लेना पाप है। ये अभी भी इश्तिहार ज्यादा है। नई नई भाषाओं के साथ इसको जनरलाइज
और मोर एक्सेप्टेबल। अरे साहब वो तो लड़की के पेरेंट्स हैं, उनका मन है गिफ्ट दे रहे हैं तो हम मना थोड़ी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लॉजिक लड़कों ने गढ़ रखे हैं। आप अपने जेंडर के साथ कितने कंफर्टेबल हैं? अबाउट योर लुक्स, अबाउट योर रीजन, अबाउट योर लैंग्वेज, अबाउट योर जेंडर। और इसलिए मैं अगले स्टेप पे जाऊं, मैं यहाँ मौजूद सारी लड़कियों से गुजारिश करना चाहूँगा, खूब पढ़ाई करो, बढ़िया नौकरी हासिल करो, अपना काम करो, पर अपने सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने कॉन्फिडेंस और अपनी हेल्थ की कीमत कर लो। और ये बात लड़के भी याद रखें, दुनिया का कोई सीटीसी, दुनिया का कोई भी न्यूमेरिकल फिगर, दुनिया की कोई भी पोजीशन तुमसे तुम्हारी बीती हुई नींद और तुम्हारा खोया हुआ स्वास्थ्य हासिल करने में तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। इसलिए बहुत मेहनत करना, पर इतनी मत करना कि इंसान होने के जो सबसे बुनियादी सबक हैं, सोना, रोना, खाना और खोना, इनको भूल जाओ। हमने हजारों बरस की जद्दोजहद इसीलिए की है। हमारे पुरखों ने आग बरतना सीखा, चक्का बनाया, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ ह्यूमन काइंड। आप दुनिया की कोई भी मशीन देखिए, उसमें आपको एक सर्कुलर डिजाइन दिखेगी, इसलिए ताकि हम चैन की नींद सो सकें। तो अगर तुमने ऐसे सपने पाल लिए हैं जो कि बाजार ने तुम्हें फीड किए हैं, जिसके चलते तुम्हारी नींद खराब हो रही है, तो फिर तुम गलती कर रहे हो। अगर तुमने बाजार के इश्तिहार देखकर ऐसी फूड हैबिट्स पाल ली हैं, ऐसी महत्वाकांक्षाएं पाल ली हैं जो तुम्हें सोने नहीं दे रही हैं, तो गलत कर रहे हो। और ये कोई फिगर, कोई सीटीसी, कोई पैसा, कोई पेंट हाउस, कोई कार तुम्हें वापस नहीं दिला पाएगा, ऐसे रेत की तरह फिसल जाएगा। काक चेष्टा, कौवे की तरह चेष्टा करनी है, अपनी क्लास में बढ़िया रहना है, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है, असाइनमेंट मत टालना। आप में से आप लोगों को पुणे में पढ़ने का मौका मिला है। ये महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी है। असाइनमेंट होते रहेंगे, एक आध बार तो क्लास बंद करोगे भी, पर बेहतर होगा कि क्लास किसी वाहियात किस्म की फिल्म के लिए बंद करने के बजाय कोई अच्छा थिएटर देखने के लिए बंद करो, किसी अच्छी एग्जीबिशन के लिए बंद करो। पुणे में बहुत शानदार मराठी नाटक होते हैं, बहुत अद्भुत फिल्में दिखाई जाती हैं। तुम्हें ये मौका मिला है नियति के द्वारा कि तुम एक ऐसे शहर में आओ जहाँ पर मराठी बोली जाती है। तो अगर आप मराठी स्पीकिंग नहीं है तो आप कोशिश करिए कि इसी बहाने इन 2 वर्षों में महाराष्ट्र की महान सभ्यता, संस्कृति और भाषा से अपनी दोस्ती बढ़ाएं। दोस्ती बढ़ाओगे तो प्रेम होगा, और प्रेम होगा तो बिना एफर्ट के सीख जाओगे। किसी डंडे के जोर से मत सीखो। और यही बात मैं मराठी भाषी मित्रों से कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी कक्षा में, तुम्हारी क्लास में अलग अलग सब नेशनलिटीज के, अलग अलग कल्चर के स्टूडेंट्स आए हैं, उनसे दोस्तियां करो। एक नागालैंड की लड़की तुम्हारी दोस्त होगी तो तुम्हें वहां के कल्चर के बारे में पता चलेगा। एक कश्मीर का लड़का तुम्हारा दोस्त होगा तो वहां के कल्चर के बारे में। यू आर ब्लेस्ड कि तुम्हारी क्लास में प्लूरलिटी है, इसको अपनी शक्ति बनाओ। दिस इज काकचेष्टा फॉर यू। कौवे की तरह बिल्कुल फोकस्ड, कौवे की तरह सुपर कंफर्टेबल। और दूसरी चीज बको ध्यान, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। बगुले सा ध्यान बैठा रहता है एक पांव पे घंटों, साधना सा करता, क्योंकि उसके पास स्मार्टफोन नहीं है। स्मार्टफोन जिस पे नोटिफिकेशंस आते हैं, अब स्नैपचैट वाला आ गया, इंस्टा वाला आ गया, थोड़े वोक है तो ट्विटर भी चेक करना होगा कि आज ट्रम्प काका और मस्क काका किस बात पर लड़े। यूट्यूब तो है ही, और सारा वैलिडेशन इसी बात से हो रहा है कि नोनू सोनू वाली गणना करने के लिए अपने पास कितना फुटकर का नॉलेज है और अपनी पोस्ट या रील पे कितने लाइक आ रहे हैं। सारा वैलिडेशन जब इसी से तय हो रहा है, तो आपका ध्यान भटकाने के लिए, आप वक्त ना बन पाए, बगुला ना बन पाए, इसके लिए दुनिया में तमाम साधन पहले से मुहैया है। तो ऐसे में करें क्या, कैसे एकाग्रता बरतें। एकाग्रता बरतने के लिए जरूरी है कि तुमने अपनी जिंदगी में जो भी शानदार लक्ष्य सोच रखे हैं उनको एक कागज पर लिख लो और अपने स्टडी स्टेशन या वर्क स्टेशन के सामने चिपका दो, ताकि तुमको निरंतर ध्यान रहे कि तुम यहाँ किस लिए आए हो। घर द्वार छोड़ के, कंफर्ट छोड़ के पढ़ने के लिए क्यों आए हो, सिर्फ मगिंग करने तो नहीं आए हो। जब ये लगातार ध्यान रहेगा कि तुम्हें कहाँ जाना है, तब शायद ध्यान थोड़ा कम भटके।
जब तुम कौवे की तरह अपनी स्किन में कंफर्टेबल हो जाओगे तब तुम्हें इस बात का बहुत फर्क नहीं पड़ेगा कि दूसरे कैसे रिमार्क दे रहे हैं अबाउट योर क्लोथ्स, अबाउट योर एक्सेंट। बगुले की तरह ध्यान रखना है अपने लक्ष्य को, जो भी तुम्हें जिंदगी में करना हो। श्वान निद्रा, ये बड़ा जरूरी है साहब। कुत्ते की तरह चौकन्ना सोना है। ये नहीं करना है कि रात को बहुत ज्यादा मादक पदार्थों का सेवन कर लिया और 12 घंटे सो रहे हैं। मैं ये मानना चाहता हूं कि तमाम किस्म के नशे आपको नहीं लुभाते होंगे। अब आप कहोगे साहब कहना बहुत आसान है, आपने भी अपनी जवानी के दिनों में कुछ तो दाएं बाएं किया ही होगा। 2-3 नशे बता देता हूं, बढ़िया किस्म के नशे हैं, तुम्हारे पेरेंट्स ऑब्जेक्ट भी नहीं करेंगे, पैसा भी भरपूर देंगे। एक नशा है खेल का नशा। आप में से कोई खेलता है? बाकी लोग इनसे पूछिएगा, जब आप स्विमिंग कर रहे हो, स्क्वॉश खेल रहे हो, टेनिस, बैडमिंटन, व्हाटएवर इज योर गेम, हम एक दूसरे जीव में तब्दील हो जाते हैं। ट्यूशन के लिए सुबह 10 बजे उठने में मौत आती है, क्रिकेट के मैच के लिए सुबह 4 बजे जाग जाते हैं क्योंकि पिच पे कब्जा करना होता है। सत्य बात है। खेल का नशा पाती है। और जब मैं खेल का नशा कह रहा हूं तो ये जो PS4, PS5 वाले खेल है, ये नहीं कह रहा हूं। हड्डी ऐसे मुड़ जाएगी, पता नहीं चलेगा, आंख के नीचे गड्ढे हो जाएंगे और आंखें बंद करके सोने की भी कोशिश करोगे तब भी PS5 वाले ही ग्राफिक्स चल रहे होंगे दिमाग में। कभी खेलना हो खेल लेना। अपन ने तो, हम तो कॉन्ट्रा और मारियो वाले जमाने के हैं डॉक्टर साहब, तो बहुत मुक्त रखा है। एक खेल का नशा पकड़ लीजिए, आपको स्वस्थ भी रखेगा, टीम स्पिरिट भी सिखा देगा, माथे का पसीना अगर पांव की हड्डी तक पहुंचेगा तो बहुत सारी चीजें ठीक रहेंगी, नींद बढ़िया आएगी और आपको पता चलेगा कि स्टेमिना कितना जरूरी है। तो अगली बार जब आपकी तरफ कोई सिगरेट पढ़ाएगा ना तो आपके पास मना करने की एक वजह होगी, बिकॉज यू नो दैट इफ यू स्मोक then you won't be able to perform well in the arena। बहुत सिंपल है। आप कभी जोकोविच को, अल्कराज को नहीं देखेंगे ब्रो आज बढ़िया माल फूटते हैं, नशा उनके पास है, उनके पास बेहतर खेलने का नशा है कि विंबलडन में मैं ऐसा क्रॉस मारूं, ऐसा नेट गेम खेलूं कि पूरी दुनिया देखे। खेल का नशा पाइए। पढ़ने का नशा बहुत अद्भुत है। सिलेबस की किताबों की बात नहीं कर रहा हूं। आप अगर मेरा झोला देखें, वैसे ना ही देखें, किसी का झोला क्यों नहीं देखना है आपको, सरकार तो आप लोग हैं नहीं जो किसी जिंदगी में जबरदस्ती घुसे। तो अगर मैं आपको अपना झोला दिखाऊं, ये बेटर है, इसमें मेरी कंसेंट शामिल है, तो आपको हमारे झोले में तमाम चीजों के अलावा हमेशा 1-2 किताबें दिखेंगी। किताबों का नशा अद्भुत होता है। मैं इन दिनों हैरी पॉटर रिवाइज कर रहा हूँ। हालत ये हो गई कि मुझे कोई लंबी दाढ़ी वाला आदमी दिखता है तो मैं, मेरा दिल करता है बोलूं अरे प्रोफेसर डंबलडोर आप यहाँ। कोई चश्मे वाला व्यक्ति दिखता है तो लगता है इसके माथे पे अगर अजय देवगन की तरह छज्जे टाइप के बाल हैं तो हटा के देख लूं कहीं कोई चोट का निशान तो नहीं है। किताबों का नशा अद्भुत है। कहानियां आपको नए सिरे से जिंदा करती है। दे गिव यू इमेजिनेशन। Once you graduate from here and once you start sitting in the strategy meetings in the boardroom, सबसे ज्यादा तुम्हें जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी वो है ऑब्जर्वेशन एंड इमेजिनेशन। एक प्रोडक्ट दे दिया गया, उसको मार्केट करना है, उसको सेल करना है। अगर तुम्हारे भीतर कल्पना शक्ति नहीं है, अगर तुम्हारे भीतर शब्द नहीं है, कैसे करोगे? किताबों का नशा पा लीजिए, बढ़िया भोजन का नशा पा लीजिए। और बढ़िया भोजन वो नहीं होता है जो सस्ते फूड ब्लॉगर की तरह गए और रोज शाम को डीप फ्राइड चीजें खा के चले आए और बोले हे फ्रेंड्स आज हमने ये खाया, लाइक कमेंट सब्सक्राइब। खर्च हो जाओगे। इंटरनेट बहुत सस्ता है, हर तरह की चीजें चलती हैं, पर तुम्हारी जिंदगी सस्ती नहीं है। श्वान निद्रा, क्या सीखें कुत्ते से? कुत्ते से हम सीखें अलर्ट रहना, अलर्ट अपने ड्रीम्स के बारे में, अलर्ट अगर कोई बुरी आदत हो गई तो उसके बारे में भी। भले ही तुम्हें आदत होगी तुम्हें रात में देर तक जगना है, बट नेवर बी कंफर्टेबल विद दिस बैड हैबिट। डोंट मेक पीस विद इट। मैंने कहा अपनी स्किन के साथ कंफर्टेबल होना, अपनी बुरी आदतों के साथ कंफर्टेबल नहीं होना है। श्वान निद्रा रखनी है, चौकन्ना रहना है। इतने नींद में नहीं चले जाना है, इतने नशे में नहीं चले जाना है कि जिस मकसद के लिए आए वो भूल जाए। अल्पाहार। बीते दिनों मैं अपने घर के बगीचे में गया तो मैंने देखा कि कुछ पौधे तड़प तड़प के मर गए। हमने अपने माली काका से पूछा कि क्या होगा, तो मेरे माली काका ने जो बताया मुझे लगा कि वो
इस देश के चौराहों पे लेके जाना चाहिए। मालिक काका बोले कि बेटा कम पानी से कम पौधे मरते हैं, ज्यादा पानी से ज्यादा पौधे मरते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, आज की तारीख में हम और आप जिस प्रॉब्लम से सबसे ज्यादा जूझ रहे हैं, ये प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है। इतने सारे ऑप्शंस हैं, आपके वार्डरोब में 4 कमीजें हैं, बढ़िया कॉटन की शर्टें हैं, कितना भी हैवी मॉनसून हो ऐसा तो होगा नहीं कि 3 शर्टें ना सूख पाए 3 दिन में, पर आपको 40 चाहिए, क्योंकि स्क्रॉल करते करते आपको दिखा कि आपका फेवरेट इन्फ्लुएंसर, फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस यही कपड़े पहने, और चूंकि वो ये कपड़े पहने हैं इसलिए वो खूबसूरत और आकर्षक लग रहे हैं। ये आपके दिमाग में आ गया है कि अगर मैं फलानी टी शर्ट पहनूंगा, ढिकाने जूते पहनूंगा, ये वाला परफ्यूम लगाऊंगा और इस रेस्टोरेंट में जाऊंगा तो मैं दुनिया का सबसे डिजायरेबल आदमी या औरत बन जाऊंगा। निहायत ही गलत बात है। कद्दू उनको पैसे मिलते हैं इसलिए वो शर्ट पहन रहे हैं, अपने अपने घर में वो भी मुचड़ी हुई टी शर्ट नहीं रहते और कंफर्टेबल रहते हैं। प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, मालिक काका ने कहा ज्यादा पानी डाला इसलिए पौधे मर गए। हम लोग कुछ मामलों में अपनी जिंदगी के गमलों में ज्यादा पानी डाल रहे हैं, ज्यादा इच्छाएं डाल रहे हैं, फोमो से घिरे हुए हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। नहीं होता है भाई ऐसे। तो महत्वाकांक्षाएं रखिए लेकिन इच्छाओं का दबाव मत रखिए। अंततः तुम इससे कतई तय नहीं होगे जब सोने जाओगे और प्रफुल्लित मन से उठना चाहते हो कि नहीं कि तुम्हारे वार्डरोब में कितने परफ्यूम, कितने स्नीकर्स, कितनी ज्वेलरी, कितने शूज हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बढ़िया 7-8 घंटे की नींद, दुरुस्त ढंग से काम करने वाला गट, शरीर के वाइटल ऑर्गन्स ठीक हो, मैदान पे जब उतरो तो 1 घंटे बाद हांफो नहीं, जो काम कर रहे हो उसमें मन लगे एंड कंटेंट फील करो। ऐसा कंटेंट कंज्यूम नहीं करना है कि कंटेंट फील करना भूल जाओ। संतुष्टि नहीं जीवन में, हाय हाय किलकिल लगी हुई, भागे जा रहे हैं। और इसके लिए जरूरी है कि आप अल्पाहार करें। अल्पाहार का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि भोजन की मात्रा घटा लें, वो भी घटा दें। आपको दुनिया के सारे विद्वान यही बताएंगे कि कम खाइए, 4 रोटी की भूख है तो 3 रोटी खाइए। अल्पाहार का मतलब है कि व्हाट यू आर कंज्यूमिंग एज अ होमो सेपियंस, एज अ ह्यूमन बीइंग, प्लीज चेक। आप क्या कंटेंट देख रहे हैं, क्या फिल्में देख रहे हैं, क्या गाने सुन रहे हैं, कैसे लोगों की संगत कर रहे हैं, डू चेक। जितने केयरफुल आप रहते हो ना प्रोमो कोड अप्लाई करते समय, जितने केयरफुल रहते हो बार्गेनिंग करते समय, उतने ही केयरफुल रहो दैट व्हाट यू आर कंज्यूमिंग। इसलिए अल्पाहार बहुत जरूरी है। कायदे की चीजें देखो, सारी फिल्में नहीं देख पाओगे, सारी किताबें नहीं पढ़ पाओगे, सारे लोगों के प्रिय नहीं बन पाओगे, कुछ के बनो पर पक्के बनो, जिगरी बनो। और सबसे आखिरी चीज है गृह त्यागी। अब गृह त्यागी का क्या मतलब है? किसी भी चीज से इतना अटैच नहीं हो जाना है कि उसको छोड़ने में तकलीफ हो। और सीखने के लिए कोई भी घर छोड़ने को राजी रहे। अब सीखना क्या है? सीखने का मतलब है गति, ठहरा हुआ पानी नहीं बचना। आप लोग सीखना चाहते हैं इसलिए इस ऑडिटोरियम में आए, वरना अपने अपने घरों में आराम से चाय पकौड़े खाते हुए मानसून के कसीदे कर सकते थे। घर छोड़ने का मतलब है कंफर्ट छोड़ना। जिंदगी में बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे वेयर यू विल बी इन अ कंफर्टेबल पोजीशन। यार सब ठीक तो चल रहा है, जंग लगना शुरू हो जाएगी तब तक तो। इसलिए कीप चेकिंग कि बहुत ज्यादा कंफर्टेबल तो नहीं हो गए, बहुत ज्यादा स्थिर तो नहीं हो गए, क्योंकि अंततः तो ये दुनिया भी छोड़नी है। तो जब इस दुनिया वाले घर में नहीं रहना है तो किसी आदत के, किसी कंफर्ट के घर में बहुत ज्यादा नहीं रहना है। ये विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं, इनका आप पालन करें, अगर कर पाए तो बढ़िया है। आखिरी में मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा मेरे नौजवान दोस्तों, रात में सोने से पहले थोड़ा सा हिसाब किताब रखना है। बगल में चाहो तो एक डायरी रख लेनी है कि आज का दिन कैसा बीता। प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी का तोड़ क्या है, इस पॉप का तोड़ क्या है? प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी का तोड़ है पॉज। व्हेन यू टेक अ पॉज यू कैन रिफ्लेक्ट। इसलिए कितने भी व्यस्त हो जीवन में, पालथी मार के, और यदि तुम्हारी सेहत दुरुस्त है तो पद्मासन में बैठ के। पद्मासन जानता है कोई? तो जानते हैं? बहुत बढ़िया। पद्मासन होता है जब आपके पांव के दोनों पंजे, जब आप पालथी मार के बैठ रहे हैं तो ऊपर की तरफ दिखें। पदम का मतलब होता है कमर। थोड़ी देर पहले गणपति महाराज बैठे थे कमर पर। ये आपके इर्द गिर्द जो प्रतीक है वो ऐसे ही नहीं है,
देयर इज अ रीजन कि पूर्वज हजारों वर्षों से बार बार आपको उनको दिखा रहे हैं। पद्मासन में बैठने का मतलब है कि आपकी हैमस्ट्रिंग मजबूत है, आपके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है। तो 24 घंटे में चाहे 5 मिनट के लिए बैठो, पद्मासन में बैठो, अर्ध पद्मासन में बैठो, सुखासन में बैठो, पर बैठो। और ये जो कुंतुड़ा अपने हाथ में लिए घूमते हो, मोबाइल इसको साइड में रख दो, साइलेंट करके। आंखें खुली रखनी है तो खुली रखो, किसी बिंदु पर केंद्रित करो, वरना बंद भी कर सकते हो। सुगम संगीत बजाओ, हनी सिंह वाला नहीं, राग वाला। जोग सुनो, शिवरंजनी सुनो, भैरवी सुनो, अहे भैरव सुनो, जो दिल करे वो राग सुनो। कोई राग नहीं आता, गूगल कर लो, इवनिंग रागास, फ्लूट लगा लो, संतूर लगा लो, आंख मूंद के बैठो और अपने आप से पूछो कि आज का दिन मैंने कैसा खर्चा है। क्या किसी से प्यार से बात की? क्या कोई नई चीज देखकर उत्सुकता दिखाई? कुछ सीखा? सुबह जहां जिस जगह जागा था उससे कुछ कदम आगे बढ़ा? अगर किसी का दिल दुखाया तो आखिरी में उससे पूरी संजीदगी के साथ माफी मांगी क्या? अपने प्रति कृतज्ञ रहा क्या? ग्रेटिट्यूड रखा क्या? और अपनी देह में और अपने दिमाग में कुछ नया जोड़ा क्या? कुछ बेहतर किया क्या? अगर इनमें से ज्यादातर के जवाब हाँ है, शुभकामनाएं। अगर ना है तो अपने आप को क्रूरता के कोड़े नहीं मारने हैं, क्योंकि होपफुली तुम्हें एक और दिन खर्च करने को मिलेगा जिसमें ये सबक नक्की होंगे कि पिछले दिन ये 2 चीजें रह गई थी, आज ठीक कर लूंगा। इसीलिए तुम भारत भाग्य विधाता हो, क्योंकि तुम्हारे पास ऊर्जा है और तुम्हारे पास उम्र है। इर्द गिर्द की चीजों के प्रति उत्सुक रहो, और जब भी इस तरह के बोझिल भाषण जैसा अभी सुन रहे हो, सुनने का मौका मिले और बोरियत हो रही तो कहना कोई बात नहीं, ये वक्त भी बीत जाएगा। जब जिंदगी में बहुत सुख आए अपने आप से कहो ये वक्त बीत जाएगा। जब जिंदगी में बहुत दुख आए तब भी अपने आप से कहो ये वक्त बीत जाएगा। कुछ भी स्थिर नहीं है सिवाय इस संकल्प के कि जिंदगी में 2 कीवर्ड से इनके साथ रहना है। एक है मौज। हम सबको लाइफ में प्लेजर चाहिए। हिंदू मनीषा में जब पुरुषार्थ की बात करते हैं तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, मौज में रहना है, आनंद में रहना है। हमारे यहाँ आनंद को बुरी वस्तु नहीं माना गया। क्लास में मजे आ रहे हैं, मजे करो। और दूसरी चीज है उस मजे के लिए कि वो तात्कालिक न रहे, एडहॉक न रहे, मेहनत करो। मैं ये मानना चाहता हूँ कि आप लोगों ने बहुत प्रज्ञावान होकर ये कोर्स चुना है कि अब मैं यहाँ MBA करने आया हूँ। अपने क्लासमेट से सीखो, अपने टीचर से सीखो, अपनी सराउंडिंग से सीखो। स्टे क्यूरियस, स्टे अलर्ट। थैंक यू सो मच। धन्यवाद श्री सौरभ द्विवेदी जी, आपके प्रेरणादायक संबोधन के लिए। शायद यही कारण है कि आप युवाओं के प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं। आपने इस बैच को सीमाओं के आगे सोचने की दृष्टि दी, इसके लिए परम धन्यवाद। It's now time to introduce our guest of honor, Mr. Amit Puri. Mr. Puri brings with him over 20 years of deep experience in the real estate industry. Most recently, Sir served as the Group CEO at BMW Developments, where he led a team of over 300 professionals. Under his leadership, the company strengthened its position in the luxury branded residences segment, with a sharp focus on strategic planning, operational efficiency, and building strong partnerships. In his role, Mr. Puri oversaw a wide range of functions including sales, marketing, project design, legal, technology, property management, and customer experience. Sir played a key role in shifting the company's identity from being a broker to being recognized as a luxury developer, a move that helped position the brand for long-term value creation. Before BMW, Mr. Puri was a partner and chief strategy officer at ACR Partners, where he drove regional expansion and shaped the firm's strategic direction. His work revolved around financial oversight, nurturing client relationships, and mentoring high-performing teams. Known for his sharp thinking and collaborative leadership style,
Mr. Puri is passionate about driving innovation, ensuring sustainable growth, and maintaining the highest standards of transparency and integrity in all his work. So I now request sir to please address the gathering. Over to you, sir. Good afternoon, everyone. Very difficult, first of all, to take the stage after such an impactful speech. Especially there's other Hindu people who don't just speak more in English. Because I come from Dubai, there is a eclectic culture, and we all are blessed in a way that we're able to make friends from all over the world. But at the same time, there's the pressure that you have to do business with everyone from different cultures of the world. So golf helps, but language is the most important. So I'm going to mostly speak in English. I've got a small presentation, but before I start that, 20 slides, half a minute each. I will just take a cue from my previous speaker, Mr. Saurabh, and I didn't know him until I came here. I'm sorry, my apologies. But what an impactful speech, and I'm sure you all learned a lot from that. मेरे को ये लगता है कि all of you have the kawa and the dog in you. Okay, so all of you have that characteristic. All of us have it. It's just that when can we nurture it, and when can we grow it? At what stage? I was sitting like you 24 years ago. I come from an institute called Symbiosis, and I was one amongst the audience. And today, as a corporate goal, I became a CEO in a firm in Dubai. Real estate being my first and last love. That's the only sector I understand. Being an architect, I feel that I will do justice to something, a very small thing. So I need to see people who are passionate about certain things in life, and then they follow it, and then they have a vision, and they have the alertness, and they don't care, they don't bother about anything else, and they try everything. They try everything in life, not to say कि मेरे कुछ चीज़ मैंने करी नहीं अपनी life में. I'm going to be 50 years old next month, and मैंने अपना last week अपना tattoo बनवाया. But I said मैंने tattoo नहीं कराया life में यार, I haven't been able to do justice to it. But why I'm here is to say you should try everything. We'll go through a small presentation which talks about the leader in you. All of you have a leader, okay? I'm here to take that out of you, or to give you some thought, some food for thought, to say that, okay, if you have to tomorrow get a good job, or tomorrow settle down somewhere beautiful, anywhere in the world, what you need is to have that leader alive in you. Okay, to be comfortable with yourself and have that leader alive, because somewhere the world tries to get you down, and your goal should be that you will never ever bow down. Okay, so we'll take a small presentation, and if there are questions you could ask later. Well, I'll make it very quick because we have only about 8 to 10 minutes. Leadership excellence in real estate. Okay, can we keep going? Do I have the okay, it's right here. Quickly, we're going to talk about who's a true leader. In my experience of 27 years of work, is a leader born or created? Can a leader actually fail? And then the life cycle of real estate, which I can skip later because we don't really, we don't have much time. But I'm here to identify talent of people who love real estate. Okay, that's what I like, and maybe we could work together in the future. But I want to see people who are passionate about certain fields in life, and I want to see that through your questions later. Okay, and what every real estate leader should know. That's in the end. So, true leader. Okay. So what are the basic characteristics of an admired leader? Okay, we're going to go through all these characteristics here, but I want you guys to know that the top 4, because we are going very quickly, I would actually otherwise ask you, and I wasn't very aware of how this format is going to be. Therefore, I just thought it's going to be more interactive, but it doesn't seem like that right now. I will just take you through the main characteristics that all of you possess, but which ones do you actually need to focus on more? Or you need to work on yourself, which ones are those? As per the research, 25 years of research done, and this is what has come out. Okay, where you say the topmost today quality for a leader is actually being honest. Honest with people, honest with yourself. It's tough, more difficult to say that than to actually live it. But the more honest you are, the more leadership quality or leadership
capability is what you have. The second one's inspirational. You have to have inspiring capability. How do you do that is after determining yourself to learn every day something new. Forward looking, you have to really think about future and say where are all these trends going today. As Mr. Saurabh said, people's the kind of your mindset, and you're not able to basically focus on anything much today because of the social media around. The world says that you should do X, Y, Z, and you follow it. But what you need to do is to understand, okay, what is this social media doing to you? Because your attention span is decreasing. Like I'm talking about, I have a daughter who's 13 years old, and I went to a school 2 weeks ago, and I was told that that she's been using a lot of mobiles. And it's not just her problem, but they take quick breaks in restrooms in school, and she's in grade 8, and they quickly check how many likes and how many shares, and they come back and they want to flaunt it with their friends. So the biggest problem today is the problem of not having attention. The attention span is 7 seconds globally for students today. After that, you stop listening. So whatever we can say here, whoever is standing in front of you right now, whatever you have to hear, you will hear it for some time, and then you'll just you'll buzz off, and you will still be looking at us, but you'll not be listening. So it's important that you take away a couple of things which are futuristic, forward thinking. So you know that, okay, this has helped us, and perhaps it will help you in future. And the fourth one, the last one, will be supportive. So you have to be collaborative, and you have to be supportive of each other. Not be jealous of anybody, because there's really no comparison than yourself. And this is why you should be very comfortable to say you are your own company. You should. Top 4 characters right here. So I'm going to take you now to the some leadership styles which people have, and I don't know which one will you develop in future, but the styles are very, very unique to you, as all of you are. You're all unique. In terms of honesty, if you think about it, Mahatma Gandhi comes across as the most honest leader, and we all know why, because he had the satyagraha, and he had complete honesty with himself and his people. Whereas they were both leaders, and there was Hitler, who was also a leader, a very, very strong leader. But Hitler said the victor will never be asked if he told the truth. He did not care about the truth. So he said he needs only victory. Okay, that was authoritarian. Whereas Mahatma Gandhi, he said even if you are a minority of one, the truth is the truth. And truth by nature is self-evident, which means today or tomorrow we get to know the truth. So these are two different styles of two different people, but they're both leaders. One of the characteristics about competition, of being competent and working on yourself, just like we discussed earlier. Michael Jordan comes number 1. Hailing from a very low middle class family, just working hard to be the first billionaire in the NBA club, getting the president's medal. But he worked really hard and he made himself competent. Did not have any background of that. Inspiring. Steve Jobs comes to mind, because Steve Jobs, he was fired from his own company. I'm sure many of you know that. But he was fired from his own company, from Apple, and then somehow later on he still rebuilt it and ensured that he's the leading brand in the world today, in the top 3 in the world actually. So it seems like he was able to identify the managers and the leaders. So most of you will first become managers, but then from managers you will rise to a leader someday. So I'm showing you, that perspective in your own self, wherein you believe in yourself and you say, yes, I have that leader in me, and I can take away this from this 10 minutes presentation. The fourth one is forward looking, as I mentioned, and what comes to mind is Sheikh Mohammed, who's Dubai's ruler right now, where I live for the last 12 years. But I think I've seen the change there, which you see here in the pictures, in the last 35 odd years. So 1991, there was nothing in Dubai, and this is the leader who is so inspirational and forward-looking that he was able to change it. Today, everyone wants to move there. The biggest diaspora is Indians actually who are living in Dubai. And real estate is doing extremely well, but it's all thanks to the progressive government there, because they're forward-looking and they believe that there's lots to be done, which is what is happening today. And Dubai is one of the hottest
cities in the world today to live in as well as to work in. So the leader born or created. Okay, this is something where again we have some examples. I'll just touch upon one of them, which is Nelson Mandela. We all have heard of him, but these people, they're such, such strong leaders that they learn things from their peers and from their parents. Firstly, from their parents. So Nelson Mandela spoke about a story which I very fondly remember. He said he learned the most from his father. His father was, a tribal chief, and he lost him when he was 9 years old. But he said perhaps the leader in me came out at the time when he would go for meetings with his father, and the whole tribe would meet, and his father would sit alongside each other. But the best part that he said, I remember, is that his father would always speak last. Okay, he said that's what I got to know, that that's something so strong and so powerful that it makes you listen to everybody else, and everybody else's opinion you get, so everybody feels that they have been heard, and you speak in the end, because you also have to summarize it. As a leader, you have to ensure that you take them all together, and therefore that's collaborative. So that's the true leader's potential, where you say, okay, I have heard everybody else, and I'm going to speak in the end. Which is very tough. And for guys like me to sit in the boardroom and only listen to people, it's very difficult. But if it hits your mind and you're comfortable with it, you wait for your time. You have the patience, you have all the data to actually support what you're going to say, and therefore that helps you in the end to make that impression or make that mark. With the investor or with whoever is your client. So that's really helpful, which I have carried on till now. Sundar Pichai, Elon Musk, we all know these people. So I want to know if you guys think it's the leader is born or created. In my opinion, it's a mix of both. But mostly, I've seen that you need to create that leader. So you're born as one, but if you're not nurtured well, you will have to create that internally. You will have to work hard on yourself. You will have to still remain open about life. You can become as successful as you can. And can a leader fail? We'll stop on this one, where I can tell you some stories where big leaders have failed, but they've come back. There's been so much resilience, where they have been able to ensure that the defeat or the challenge hasn't overtaken them or their thought process, and they've still come back and bounced back in a strong way. If you see all these stories here, there are a lot of them, so we won't go through each of them. But you take a few of these. When you say Bill Gates, he's a Harvard dropout, who made it so big, still is, one of the most richest people in the world. If you know Walt Disney, he was fired from a newspaper. You know about the Beatles. Einstein did not speak until he was 4 years old. So all these facts tell you that you actually must know that failure is nothing but a learning. We never fail in life, actually. We just learn. We're always winners. So that's something that I've always believed in. And I think there's a CEO and a leader in all of you here. And therefore, my request to you is to keep that thought alive, that spark alive in you, and ensure that you enjoy your next 2 years with that thought, okay? Thanks very much. I think I'm going to stop at that one, because this is a huge presentation, but we've got limited time. Hopefully, I can just answer a few questions. If you have any questions, I want to do that for the next couple of minutes. Anybody with questions, please? Anyone questions? Questions can never be wrong. Anybody can ask questions, no problem. There aren't any, yeah? Okay, so I think that's it. We'll not go to real estate for now, because this was more technical for my own field, and I don't think it's very, very relevant for the audience here. But as a leader, just ensure that you guys are able to identify that within you and get as comfortable as you can, working on yourself every day. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you, sir, for your valuable insights and for igniting curiosity in the minds of our young professionals. It is with profound respect and admiration that we welcome to this sacred ceremony Honorable Dr. Kumar Patil Sir, Secretary Dr. D.Y. Patil Indian Society, and Pro-Chancellor Dr. D.Y. Patil Nyan Prasad University, Pune. Dr. Patil's academic journey is a testament to his unwavering commitment to excellence,
He holds the bachelor's degree in information technology and the LLB from Savitri Pune University, an MBA from Regis University, Colorado, USA, and a PhD in management. Since joining the D.Y. Patil Educational Conglomerate in 2008, Dr. Patil has been a beacon of visionary leadership, recognizing the transformative power of innovation and entrepreneurship. Sir established the DPU Foundations for Innovation and Incubation, fostering a robust ecosystem for startups and intellectual property development within the university campuses. An advocate of technical advancement, Dr. Patil spearheaded the integration of in-house ERP and health information systems across DPU institutions, enhancing transparency, efficiency, and strategic decision-making. His foresight in digital transformation has been instrumental in positioning the university at the forefront of modern education. Dr. Patil's contribution to academia are further exemplified by his intellectual pursuits. We thank Sir for his esteemed presence, and I am confident that under the guidance we will get a lot of opportunities to work together and grow. It's never just a diet, it's always a lifestyle. With this guiding philosophy, we are honored to introduce Honorable Dr. Rohini Somnath Patil Ma'am, a distinguished leader whose multifaceted contributions span the realms of health, education, and entrepreneurship. An inspiring entrepreneur and educator, Honorable Dr. Rohini Somnath Patil Ma'am is the founder of Nutrici Lifestyle and Chief Operating Officer of Dr. D.Y. Patil Gyan Prasad University. Her work reflects innovation with empathy. An MBBS graduate, Dr. Patil is among the few medical professionals in India who have seamlessly integrated clinical expertise with nutritional science. As the founder and CEO of Nutrici Lifestyle, Ma'am has pioneered a holistic approach to wellness, offering personalized diet plans, biohacking strategies, and DNA-based nutrition solutions to over 1,200 clients. Her commitment to accessible health education is further exemplified through her podcast by HarperCollins in 2021, encapsulates her years of practice in diet, nutrition, fitness, and mental health. The book offers 101 adaptable diet plans, emphasizing the importance of sustainable lifestyle changes over transient diets. Her expertise and influence have been recognized nationally. In 2019, she received the FSSAI Eat Right Award from India's Health Minister for her impactful work as a social media influencer promoting public health. Dr. Patil's dedication to public health extends to her role as an official nutritionist for national Indian athletes under GAIL and NYCS. Her insights have been shared on platforms like TEDx, where she discussed the power of digestive health, and through columns in publications such as Sakal and Pune Mirror. Today, as we commence Diksharam 2025, we are privileged to have Dr. Rohini Somnath Patil Ma'am with us. Her unwavering commitment to health, education, and holistic living serves as an inspiration to all of us. So let us extend a very warm welcome and express our heartfelt gratitude for her presence and guidance. I now request Rohini Ma'am to please address the audience. Over to you, ma'am. A very good afternoon, everyone. I can't hear your voice today. Are you all tired? आज तो first day है. Okay, very good afternoon, everyone. How many of you are feeling excited? Raise your hands. Okay, everyone is excited. That's great. How many of you are nervous today? Nobody is nervous. That's even better. And how many of you already have a goal, a dream because of which you have joined our esteemed institute today? Raise your hand if you have a dream already. It's always good to have a dream. Okay, that's amazing. That's amazing. So today I'm going to give you one basic simple formula before starting your welcome note. That this journey is always going to be up and down. Growth is never linear. There will be highs, there will be lows. Change is the only constant. We know this is a universal law, so change is going to be the only constant. So what keeps you going in this journey? So there are just 3 rules. And if you stick by these 3 rules, the journey will be a smooth one. जैसे कि सर ने कहा अभी कि
ऐसी कोई जब बहुत सुख है तो याद रखना कि ये भी बीत जाएगा, और जब बहुत दुख है तो भी याद रखना है कि ये भी बीत जाएगा. तो इन दोनों के बीच में what keeps you going is your habits, it's your routine, and it's your day-to-day things that you do every single day. And I'm going to tell you 3 things that I want you to do every single day from today onwards. I call it 5-5-5 rule. I want you to do it at night before sleeping and do it in the morning when you wake up. Very easy to do, and you can try it from tonight itself, and you can notice a shift in your surroundings, in the way you feel, and in the way you perform. So first 5 minutes, I want you to think of any 5 good things that happened today. Okay, so if you're doing it at night, 5 चीजें that are अच्छी हुई. Somebody greeted me, I did something nice for someone, somebody did something nice for me, somebody gave me water. It can be anything, but 5 things that happened today that you're grateful for. The next 5 minutes, just close your eyes and focus on your breath. Just deep breathe in and breathe out. That is all you have to do. And the last 5 minutes, I want you to practice affirmations. Now, what are affirmations? Affirmations are something where you're tricking your brain into manifesting your reality. If you want to lose weight, if you want to get fitter, just start saying, I'm at my goal weight and I look great and I feel fantastic. It's just one example. If you want to get your dream placement, I know there is time for that, but if you want to get good marks in a specific subject, just say it. I've already gotten it. And from the next day onwards, behave as if you've gotten it in your head. And you will not believe this will be your reality. One day, timeline is not in your control, but you can definitely make it happen. So that is how I want you to start your day and end your day. Just 5-5-5 rules. These 15 minutes will literally change your life. So good morning everyone and welcome. Respected dais, all teachers, parents, art members of School of Business and Strategy. Today is not just about stepping into a new academic year. It's about stepping into future filled with possibility. With the launch of the School of Business and Strategy at Dr. D.Y. Patil Gyan Prasad University, we are setting the stage for a generation of leaders who will not just adapt to the world, but they will redefine it. To the very first batch of our students, welcome to a place that will challenge you, that will shape you, and it will push you to not just become successful professionals, but very influential change makers. At Dr. D.Y. Patil Gyan Prasad University, our vision is very clear: to build institutions that blend knowledge with wisdom, strategy with soul, and innovation with integrity. The world is evolving faster than ever. Technology is disrupting markets. Sustainability is shaping decisions. And leadership today is not about power, but it's about purpose. And business is just not about making profits, it's about creating an impact. And that is why this School of Business and Strategy was built not just to help you fit into the world as it is, but to empower you to reshape it entirely. Here you won't just study business models, you will build your own. You won't just learn strategies, but you will design your own solutions. You won't just prepare for placements, but you will prepare for possibilities. But in the middle of all of this ambition, there will be deadlines, internships, presentations, and late night brainstorming sessions. And I want to leave you with one truth that often gets overlooked. Success is not sustainable without self-care. Your greatest asset in this journey is not just your brain. It's your energy, your focus, your emotional strength, and that comes from taking care of your health. In the world of business, burnout is real. And discipline is just not about managing your calendar, but so your greatest asset in this journey is not just your brain, it's your energy, your focus, and your emotional strength. And that comes from taking care of your health. In the world of business, burnout is real.
And discipline is not about managing your calendar, but it's about managing your state of being. So take your sleep seriously, nourish your body with good food, move daily, find quiet moments to recharge your mind and learn to unplug. Because the best leaders are not those who run the fastest, but they are the ones who know when to pause, when to reset, and when to come back stronger. Your degrees will open the door, but your discipline will decide how far you go. So I invite you to think like a creator, not just consumer. Collaborate more and compete less. Fail fast, but learn faster. Take risks, ask questions and speak up. But above all, take care of the person who's going to do all of this, and that is you. This campus will be your lab, it will be your launch pad, it will be your learning ground to make the most of every moment. And to Dr. Amol sir and the entire team of School of Business and Strategy, thank you for your dedication and for believing in the transformative power of education. And to all the students, thank you for trusting us with your dreams. Your decision to be here is not just a milestone for you, it's a milestone for us. So welcome again to School of Business and Strategy at Dr. D.Y. Patil Jnana University. This is where your journey begins and greatness follows. Thank you so much. Thank you, ma'am. Your words of wisdom and empowerment, along with the health tips, will surely resonate with our budding managers. Gratitude is the fairest blossom that springs from the soul. I now invite Dr. Rashmi Paranjpe to officially propose the vote of thanks. Over to you, ma'am. I, Dr. Rashmi Paranjpe, am honored to deliver the vote of thanks at this memorable induction session of Dr. D.Y. Patil, Jnana University School of Business and Strategy. On behalf of our institution and the management, I extend my heartfelt gratitude to all our distinguished speakers and guests for enriching this program with their gracious presence and insightful thoughts. A special thank you to our chief guest, Mr. Saurabh Dwivedi, journalist and founding editor of the Well and Top Show for igniting young minds with his inspiring address. Our sincere appreciation to Mr. Amit Puri, Group CEO of BMW Developers, for their practical insights. Respected Acharya Jaspreet Singh Ji, we deeply thank you for blessing us with your divine presence. Our gratitude extends to Honorable Dr. Somnath Patil, Pro-Chancellor Dr. D.Y. Patil Jnana University, and Honorable Dr. Romini Patil, Chief Operating Officer, Dr. D.Y. Patil Jnana University, for their constant support and leadership, which continues to shape the future of this institution. A warm thank you to Dr. Amol Gawande, Pro-Vice Chancellor, Dr. D.Y. Patil Jnana University, whose encouragement and direction are invaluable to us. A big thank you to the IT team, faculty and staff, to the students and parents. Thank you for your enthusiastic participation and trust. You are the heart of this institution and your presence has made this event complete. Thank you all. Thank you, ma'am, for acknowledging everyone's presence and contributions so graciously. As we conclude this sacred beginning, let us surrender our aspirations to the divine with the recitation of Pasaida, a timeless Marathi prayer composed by Saint Jnaneshwar, invoking peace, knowledge and harmony for all of us. So I request now everyone to please rise for Pasaida. विश्वात्मके देवे येणे भाग्यस्मे तोषावे तोषोनि मत द्यावे पसाय दान हे जे फळांची व्यंजती सांडो तया सत्कर्मी
देशत सकळ मंगळे ईश्वर निष्ठांची मांदी आई अनवरत भूमंडळी भेट तू भूता चला कल्पतरूंचे आरव चेतना चिंतामणींचे गाव बोलते दे अर्णव पियुषाचे चंद्रमेघे अलांचना मार्तंड ते तापहीन ते सर्वाही सदा सज्जन सोय रे होतो किंबहुना सर्व सुखी पूर्ण होनी तेही लोकी भजितो आदि पुरुषी अखंडित आणि ग्रंथोपजीविये विशेषी लोकीये दृष्टादृष्ट विजये होवे जी हेच म्हणे श्री विश्वेश्वराव हा होईल दान पसाव येणेवरे ज्ञान देवो सुखिया Thank you everyone. Please be seated. Dear students, today marks not just the start of your MBA journey, but the shaping of your character, competence, and contribution to society. May you walk the path with curiosity in your minds, courage in your hearts, and compassion in your actions. Once again, we welcome you to the SDS family, where potential meets purpose. Dhanyavad, Jai Hind. All the students are requested to please remain seated. I request everyone to please be seated. Till we escort our dignitaries from the auditorium. Thank you. A pre-bash is organized for you, pre-fresher bash on 16th of this month at Mahabaleshwar, and we all are excited to take you there. So please pack your bags and be ready. And students of PGDM can leave now. For a short interaction, students of MBA and parents are requested to be seated. Parents and students of MBA.